नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूं तो ये एक बेहद ख़ास वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में आया है और ये वीडियो है दुनिया भर के टॉप 10 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को जिस चैनल ने बनाया है उसका लिंक और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिए हैं, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि टॉप 10 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स दुनिया के कौन कौन से हैं और क्या इसमें हमारा तेजस भी है। चलिए देखते हैं। Light combat aircraft is a light multi-role jet military aircraft that mostly come from advanced trainers that have been modified or designed for engaging in light combat missions, either in light strike or attack missions, reconnaissance or interdiction roles. They are also slower than their bigger counterparts and most are only capable of subsonic speeds. These aircraft are usually smaller and more lightly armed than the bigger multi-role or strike aircraft such as the American F-15E Strike Eagle or Russian MiG-29. Most LCAs are armed with either bombs, rockets, or gun pods. Some aircraft have been developed to integrate more advanced armaments such as smart bombs and air-to-ground missiles and electronic targeting systems for better mission capability. Now let's take a look at these top 10 light combat aircraft. Number 10 is Embraer A29 Super Tucano. The EMB 314 Super Tucano, also known as A29 Super Tucano, is a turboprop light attack aircraft offered by Embraer to meet the light combat requirements of the armed forces worldwide. The primary operators of the aircraft include the air forces of Brazil, Colombia, Afghanistan, Chile, Ecuador, and Indonesia. The A29 Super Tucano carries a range of ordnance weighing up to 1,550 kilograms, including gun pods, air-to-air and air-to-surface missiles, precision-guided munitions, and bombs. The aircraft is equipped with the Pratt & Whitney Canada PT6A 68C turboprop engine, driving a Hartzell 5-bladed propeller. The engine develops enough power to attain a maximum speed of 593 km per hour, while the external fuel tanks ensure a maximum range of 3,056 km. At number 9 is AT-6 Wolverine. The AT-6 Wolverine is a light attack and armed reconnaissance solution being offered by Beechcraft. The multi-mission aircraft is contending with the A-29 Super Tucano for the U.S. Air Force's Light Attack Aircraft program. It features 7 hardpoints and can carry maximum payload of 1,864 kilograms, including more than 13 general-purpose and precision munitions. A Pratt & Whitney Canada PT6A 68 turboprop engine coupled to a Hartzell 4-bladed propellers powers the AT-6 Wolverine. The engine develops a maximum power of 1,177 kilowatt and enables the aircraft to fly at a maximum speed of 827 kilometers per hour. The ferry range of the aircraft is 3,195 kilometers when fitted with 4 external fuel tanks. Up next is L-39NG. The L-39NG is a new trainer and light attack aircraft developed by Aero Vodokody primarily for the Czech Air Force. Based on the L-39 Albatros, the aircraft made its first flight in December 2018. The jet aircraft is deployed in basic and advanced flight training, light combat, close air support, counterinsurgency, and reconnaissance missions. It features 5 external hardpoints which can carry 1,640 kilograms of payload, including a gun pod, air-to-air missiles, guided and unguided rockets, and bombs. The L-39NG's power plant integrates FJ44-4M turbofan engine, which has a maximum thrust rating of 16.87 kilonewtons. The aircraft has a maximum speed of 780 km per hour and can attain a range of 2,130 km with internal fuel. At number 7 is Yak-130. The Yakovlev Yak-130 is a twin-seat advanced jet trainer and light combat aircraft offered by Irkut Corporation. The subsonic aircraft entered service with the Russian Air Force in February 2010. Primarily intended for advanced flight training, the aircraft can perform light attack and reconnaissance missions.
It provides 9 external stations with a total payload capacity of 3,000 kilograms. It can carry air-to-air missiles, smart bombs, aerial bombs, unguided rockets, and a gun pod. The aircraft is powered by 2 Ivchenko Progress AI-222 25 turbofan engines with a rated thrust of 24.52 kilonewtons each. It can fly at a maximum speed of 1,060 km per hour and attain a maximum range of 2,100 km. At number 6 is L-159 ALCA. The L-159 Advanced Light Combat Aircraft is a single-seat subsonic attack aircraft from Czech manufacturer AERO Vodocody. The aircraft is primarily intended for light attack, reconnaissance, air defense, counterinsurgency, and patrol missions. The twin-seat configuration of the L-159 is designed for advanced flight training. The aircraft features 6 underwing mountings which can carry bombs, rocket launchers, and air-to-ground and air-to-air guided missiles. Powered by an F-124 GA-100 turbofan engine, the aircraft has a maximum takeoff weight of 8,000 kilograms and a payload capacity of 2,340 kilograms. Its maximum cruise speed is 936 km per hour, and operation range with additional fuel tanks is 2,530 km. At number 5 is L-15. The L-15 is an advanced jet trainer and light attack aircraft manufactured by Hongdu Aviation Industry Group for the People's Liberation Army Air Force. The aircraft entered service with the People's Liberation Army Air Force in 2010. The Hongdu L-15 features 6 wing-mounted hardpoints which can accommodate 3,000 kilograms of payload. The aircraft can be armed with short-range air-to-air missiles, air-to-surface missiles, rocket pods, and bombs. It is equipped with 2 Ivchenko Progress AI-222K 25F afterburning turbofan engines, and the power plant ensures a maximum speed of 1,715 km per hour and a ferry range of 3,100 km. Number 4 is M346FA. The M346FA is a light combat variant of the M346 Advanced Jet Trainer developed by Leonardo. Unveiled at the 2017 Paris Air Show, the M346FA is being promoted as a light attack aircraft that can also be used for combat training. The aircraft has 7 hardpoints to carry guided and unguided air-to-air and air-to-ground weapons and other external loads including gun, reconnaissance, and target acquisition pods weighing up to 3,000 kilograms. The M346FA's power plant includes 2 Honeywell F-124 GA-200 turbofan engines with a rated thrust of 28 kilonewtons each. It ensures a maximum speed of 1,075 km per hour. At number 3 is Textron Airland Scorpion. The Textron Airland Scorpion is a light attack and intelligence surveillance and reconnaissance aircraft offered and developed by Textron Airland, a joint venture of Textron and Airland Enterprises. The jet aircraft made its first flight in December 2013. The Textron Scorpion has a maximum payload capacity of 4,173 kilograms, while its 6 wing-mounted hardpoints can carry up to 2,810 kilograms of ordnance, including a gun, rockets, laser-guided missiles, infrared air-to-air missiles, and other guided and unguided munitions. Its power plant integrates 2 Honeywell TFE731 turbofan engines, which offers a maximum thrust of 18 kilonewtons each. The aircraft can fly at a maximum speed of 833 km per hour and attain a range of 4,074 km. HAL Tejas is at number 2. Tejas is a multi-role light combat aircraft developed by Hindustan Aeronautics Limited for the Indian Air Force and Indian Navy. The aircraft entered service with the IAF in July 2016. The supersonic jet features 8 hardpoints with a maximum payload capacity of 3,500 kilograms. It can be armed with a 23mm twin-barrel cannon, air-to-air, air-to-surface, and anti-ship missiles, precision-guided munitions, rockets, and bombs. The Tejas LCA is powered by a General Electric F404GE IN20 turbofan engine, which develops a maximum thrust of 90 kilonewtons with afterburner.
The power plant enables the aircraft to fly at speeds up to 1,975 kilometers per hour, and the aircraft can attain maximum range of 3,000 kilometers. At number 1 is Korea Aerospace Industries TA-50. TA-50 is a light attack aircraft lead-in fighter trainer version of the T-50 supersonic advanced trainer aircraft developed by Korea Aerospace Industries in collaboration with Lockheed Martin. The first TA-50 entered service with the Republic of the Korea Air Force in 2011. The aircraft carries a weapons load of up to 3,850 kilograms, comprising a General Dynamics A-53 barrel rotary cannon, AIM-9 Sidewinder, and AIM-120 AMRAAM air-to-air missiles, AGM-65 Maverick air-to-surface missiles, Hydra-70 and LOGIR rocket launchers, cluster bombs, and general-purpose bombs. Powered by a General Electric F404GE102 turbofan engine, the aircraft can cruise at maximum speed of 1,852 km per hour and reach a maximum distance of 1,850 kilometers. And with that, we're winding up the video for today, but don't forget to hit that like and subscribe button so you will become a part of our Buzz family. तो दोस्तों, ये था वो वीडियो जिसमें दुनिया भर के टॉप 10 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के बारे में बताया गया था। अब इस पर कुछ आगे बढ़ूं, लेकिन मेरा एक बहुत जेन्युइन और ठीक ठाक सवाल है कि भाई इस लिस्ट में JF-17 को क्यों शामिल नहीं किया गया। तब JF-17 भी इसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ही श्रेणी में आता है, इसी कैटेगरी में आता है, और तेजस और वो दोनों करीब करीब बराबर वेट कैटेगरी के हैं। अब पता नहीं इन्होंने उसको क्यों शामिल नहीं किया। अब ये तो इनके खैर पैमाने कुछ अलग होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो यहाँ पर नंबरिंग देखी मैंने, नंबर 2 पे तेजस है और नंबर 1 पे कोरिया का प्लेन है। लेकिन आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि कोरिया का जो प्लेन है वो लॉकहीड मार्टिन के सहयोग से बना है। लॉकहीड मार्टिन तो आपको पता ही होगा, अमेरिका की फाइटर जेट बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है और उसके पास अच्छा खासा अनुभव है। 5th जनरेशन बना रही है, 6th जनरेशन जेट्स पे काम कर रही है। तेजस को HAL ने बनाया है और भारत का स्वदेशी है। अभी अमेरिकी इंजन यूज़ कर रहे हैं या रडार इजरायली यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंजन और रडार दोनों ही कल को वो स्वदेशी हो जाने वाले हैं। तो ये 100% स्वदेशी हो जाएगा और सारी रिसर्च और सब कुछ हमने खुद किया है और खुद डिज़ाइन से लेकर सब कुछ हमने खुद बनाया है और वहाँ पर लॉकहीड मार्टिन बना रहा है। लेकिन वो भी अच्छा प्लेन है और आपको शायद याद होगा कि यही प्लेन भी मलेशिया में जो चर्चाएँ चल रही हैं वो इसी प्लेन को लेकर चल रही हैं और तेजस को लेकर भी चल रही हैं। खैर, ये उनकी मर्ज़ी है, उनके एयरफोर्स की जो फैसला होगा उनका, वो होगा कि भाई वो तेजस खरीदते हैं या वो कोरिया का प्लेन खरीदते हैं। लेकिन इन टॉप 10 में तेजस का शामिल होना टॉप 10 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में ये बहुत बड़ी बात है और उससे भी बड़ी बात है कि वो नंबर 2 पर है और JF-17 इसमें कहीं नहीं है। अब हालांकि पाकिस्तान वाले कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, झूठी लिस्ट है, हम इसको नहीं मानते, ये इंडिया वालों ने बनाई होगी, तो खैर उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ आपने गौर की, 10 के 10 में सबसे ज़्यादा स्पीड तेजस की है, सुपरसोनिक है। आपने चीज़ गौर की, सबसे ज़्यादा स्पीड तेजस की है और इसके पास हथियारों की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वो चाहे रशियन मिसाइलें हों, चाहे वो अमेरिकन मिसाइलें हों, चाहे इंडिया की खुद की मिसाइलें हों, कोई भी मिसाइलें हैं वो सब इस पर लग सकती हैं। तो वैरायटी ज़्यादा है तेजस के पास। और आपको खबर मिल गई होगी कि जल्दी ही इसको वेस्टर्न फ्रंट पे परमानेंट बेस के रूप में तैनात कर दिया जाएगा। जैसे जैसे तेजस आते जा रहे हैं हमारे पास, बढ़ते जा रही है उनकी संख्या। अभी तक तो तमिलनाडु के सिलोर में थी, लेकिन अब जो है अब वो खबर आ चुकी है कि वेस्टर्न फ्रंट पे यानी कि श्रीनगर एयरबेस मैं कहूँगा वहाँ पर तेजस की परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, परमानेंट बेस बन जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, इस पर अपने विचार ज़रूर दीजिए। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो पे। नमस्कार, जय हिंद।